Good evening, everyone. At the outset, I would like to thank each and every one of you for joining this call. And I would like to thank Nitin Gosar, who's the fund manager of this NFO, upcoming NFO, which is starting today, uh, Bank of India Multi Cap Fund. So thank you very much for taking out time. Actually, he's at the airport, but still he's taking this call, which is a very good thing for us. So just to give you a brief background about Nitin ji, he comes with a 16 years of experience into equity research and fund management space. So in Bank of India, he's managing two funds, which is Bank of India Large and Mid Cap Fund and Bank of India Manufacturing and Infrastructure Fund. So prior joining to Bank of India, he was also working with Invesco Mutual Fund for around 12 years, managing three of their flagship funds. So this is the introduction of of Nitin Gosar, who will be managing this fund. So over to you, Nitin. Just brief us what this NFO is all about and keep it a little simple for us to understand. And why do we ask our investors to, invest their money into this NFO? Sure. Thank you. Thank you for that lovely introduction. Yeah. दर्शनिक जी ने मेरे को बताया कि प्लीज ट्राई टू कीप प्रेजेंटेशन हिंदी मोड में, तो मैं हिंदी मोड में ही रखूंगा इसको। एंड अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मोड में भी शिफ्ट करना चाहिए तो आई हाँ, कैन हम डू। दोनों कर सकते हैं। इट कैन बी इंग्लिश, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। ओके ओके श्योर। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा अगर नॉइज आएगा तो डू लेट मी नो इफ इट्स टू डिस्टर्बिंग, देन आई विल स्टॉप इन बिटवीन। No, it's okay. We'll have to bear with it. That's not a problem. But you're audible enough. Yeah. श्योर। Yeah. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंड, prior to this fund, the more important part is to understand where India is positioned. अगर हम इंडिया की पोजिशनिंग समझ जाएंगे तो विल अंडरस्टैंड कि इक्विटी मार्केट उससे बेनिफिट करने के लिए कितना क्रिटिकल है। एंड देन प्रॉब्ली विल मूव ऑन टू व्हाई द मल्टी कैप कैटेगरी एंड व्हाई पर्टिकुलरली बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रन डाउन की जो डेटा आपके फ्रंट में है, कीपिंग इट वेरी सिंपल। जो फर्स्ट चार्ट है उसमें जीडीपी है, सेकंड चार्ट है उसमें बैलेंस शीट है, थर्ड है उसमें इन्फ्लेशन है, एंड जो फोर्थ है उसमें इंटरेस्ट रेट है। हर एक चार्ट में तीन ही कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, यूरोप। एंड हर एक जो कलर है एक पर्टिकुलर टाइम जोन को डिनोट करता है, या इट टॉक्स अबाउट अ एरा in which the data was been taken up. So gray is talking about 10-year data, orange is talking about previous year data, and blue is talking about latest year data. Looking at the GDP growth, India was growing at 6% over last 10 years, जो gray में दिख रहा है. US was growing at 4% and Europe was growing at 1%. Last 18 months, India's growth accelerated, Europe and US growth also accelerated. But more important is Nitin जैसे ji, हम sharp sorry to interrupt in between. Kalpesh, can you get it on present mode, presentation mode पे, so that वो थोड़ा screen बड़ा हो जाएगा? Yeah, better. Thanks, को, thanks. को, सो जीडीपी ग्रोथ तो हमने समझ ली कि इंडिया वाज ग्रोइंग एट फास्टर रेट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज जैसे हम कहते हैं कि कोई भी स्पीड इतनी क्रिटिकल नहीं होती अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी ना हो। इफ यू आर ओनिंग अ फरारी देन प्रॉब्ली यू आर नॉट वरीड अबाउट दिस एक्सपेंडिचर फरारी कैरीज, बट इफ यू आर इन अ मारुति लेट्स से स्विफ्ट और probably desire, then you are equally concerned about the efficiency it gives. Same is with the next data point. जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सेम कंट्री को ग्रो करने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना उसमें पैसा लगाते हैं इज व्हाट बैलेंस शीट टेल्स। जैसे हमने देखा इंडियाज ग्रोथ वाज 6%, बट इंडियाज बैलेंस शीट वाज ग्रोइंग एट 7%। व्हेन इट कम्स टू यूएस द बैलेंस शीट ग्रोथ वाज 12। अभी आप देखेंगे टू गेट 4% ग्रोथ इन यूएस, यूएस वाज डिप्लॉइंग 12% बैलेंस शीट ग्रोथ। सेम वाज फॉर यूरोप, 1% जीडीपी ग्रोथ के लिए यूरोप ने लास्ट 10 साल में 9% से अपनी बैलेंस शीट को एक्सपांड किया। इससे होता क्या है, जनरली आप अगर ज्यादा एक्सेलरेट करते हो फिर भी आपको अगर स्पीड नहीं मिलती तो इट रिजल्ट्स इनटू हीटिंग ऑफ मशीन। आपका इंजन गर्म हो जाता है। जब इंजन गर्म हो जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आने लगता है। दैट इज व्हाट द थर्ड चार्ट इज टॉकिंग अबाउट।
The inflation in India has been around 6% for last 10 years, for last immediate year and even last 6 month या 8 months है. तो इंडिया ने अपनी स्पीड बरकरार रखी, इनफैक्ट बैलेंस शीट भी मेंटेन की एट 7% ग्रोथ, रिजल्टेंटली इन्फ्लेशन भी बैलेंस्ड रहा. 6% कल भी था, आज भी है, और ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पे भी उतना ही है. बट व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड यूरोप, यहाँ पे यू विल रियलाइज कि इफ यू एक्सेलरेट मोर तो आपकी इकोनॉमी हीटअप हो जाती है या इन्फ्लेशन आने लगता है. फॉर लास्ट 12 years यूएस एंड यूरोप यही कर रहे थे, पर उनका इन्फ्लेशन ट्रिगर नहीं हुआ. द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ट्रिगर्ड इट. कभी भी कोई भी चीज अगर नहीं इम्प्रूव होती तो नहीं होती, या खराब नहीं होती तो नहीं होती, बट उसको ट्रिगर करने के लिए कोई इवेंट होता है. जैसे आप सब स्टॉक मार्केट में भी जानते हैं कि बहुत सारा डेटा हमें पता होता है, बट उसे इवेंट को एक ट्रिगर करती है एंड मार्केट अकॉर्डिंगली या तो ऊपर जाता है या करेक्ट होता है. सेम हैपेंड विथ यूएस एंड यूरोप. हमें पता था कि उनकी बैलेंस शीट एक्सपांड हो रही है, पर अब जाके उसमें इन्फ्लेशन आया. इन्फ्लेशन वैसे बुरा नहीं होता है अगर वो 12 महीने के अंदर नॉर्मलाइज हो जाए, बट इफ इन्फ्लेशन स्टेज मोर देन 12 months, देन इट टर्न्स आउट टू बी लेबर इन्फ्लेशन. जैसे कि अगर हम ड्यूरिंग आवर एक्सपेंडिचर, इफ वी विटनेस इन्फ्लेशन for more than 12 months, then we'll go back to our employer and we'll ask for more salary hike. Same happens with labor class, they ask for more salary hike. तो उसे फोर्सफुली नीचे रखने के लिए जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं कि आपको कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि लेबर इन्फ्लेशन की ओर ना जाए. लेबर इन्फ्लेशन एक बार जो बढ़ जाता है तो इट नेवर कम्स डाउन, इट स्टेज एलिवेटेड. सो सिस्टम ऑलवेज लव्स टू हैव इन्फ्लेशन, बट वो एक 12 महीने के अंदर अगर नॉर्मलाइज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लेबर इन्फ्लेशन में चले जाता है, विच इज प्रिटी बैड. इंडिया अगर उसका इंजन 6% से गर्म था, इफ आई वर टू यूज दैट वर्ड, इन्फ्लेशन वॉज 6%, तो ऑब्वियसली जैसे हमें सिखाया जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट इन्फ्लेशन प्लस रिटर्न देना चाहिए ताकि आपका इन्फ्लेशन एज कैरी रहे. एग्जैक्टली इंडिया में वही हुआ. 6% इन्फ्लेशन था, 7% से इंटरेस्ट रेट था. बट वही अगर हम यूएस का और यूरोप का देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी दे आर स्टिल नॉट एबल टू कैप्चर इन्फ्लेशन. फ्रॉम दिस डेटा पॉइंट व्हाट वी नो clearly is India's positioning is very strong to take strong policy measures. इसके लिए our government is in position to take very drastic steps. Moving on to next slide, these are talking about two data points, which is contribution to GDP and contribution to world market cap. माने जितनी आपकी जीडीपी ग्लोबली कंट्रीब्यूट करती है, क्या उतना ही आपका मार्केट कैप कंट्रीब्यूट करता है? वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड इंडिया इन दिस. यूएस आज से 10 साल पहले उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही थी 22%, जबकि मार्केट कैप उसका कंट्रीब्यूट कर रहा था 32% टू ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट कैप. 22 एंड 32 इसमें गैप है 10% का. बट इफ यू मूव फास्ट फॉरवर्ड टू लेटेस्ट ईयर, लास्ट 10 ईयर के बाद अभी का साल, so their GDP has expanded, which is almost 29%, but market cap contribution has gone up further. Gap has expanded. Now gap is 15% versus 10-year back gap of 10%. What it means, कोई भी country अगर resilience होती है, resilient दिखाती है कि I can withstand the pressure, then market is willing to give it a better market cap. Same happens or doesn't happen with most companies or countries, but in case of India, हमने देखा कि हमने resilience दिखाया, बट जो आगे वाला डेटा है इट शोज कि वी आर नॉट बीन इक्वली रिवॉर्डेड. इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी 2.4% 10 years बैक, और मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन भी उसके आसपास ही था. फास्ट फॉरवर्डेड टू लेटेस्ट ईयर डेटा, अभी हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन 4% हो चुकी है. व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट, फॉर 4% कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव टू वर्ल्ड, वी आर रैंक्ड नंबर 5th. दैट्स द पावर इंडिया इज हैविंग कि इतना छोटे कंट्रीब्यूशन के बाद भी हम इतना ऊपर आ गए. The number two player, which is almost you can say China, is at 18 trillion. We're still at 3 trillion. That means हमारे बीच में गैप है almost 6 times का. अभी हमारी पॉपुलेशन अगर देखें तो पॉपुलेशन तो सिमिलर है, 140 करोड़ दोनों साइड, बट इंडिया की अगर जीडीपी देखें तो वी आर एट 3 ट्रिलियन. चाइना की यही जीडीपी
2007 में थी, 2007 में when they were doing the Olympics. When India has reached 3 trillion, India has announced to do a bidding for Olympics in 2036. तो हम जो भी कर रहे हैं हम सोच समझ के कर रहे हैं, वी आर नॉट हरिंग अप इनटू थिंग्स. बट व्हेन इट कम्स टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन, हमने काम ज्यादा किया है बट हमें मार्केट कैप उतना नहीं मिला. What it clearly means, maybe our market are not completely factoring in all the companies that can potentially get listed, or probably there is some scope for profits and market cap both to go up. Moving to next data, जब हम कोई भी अच्छे हाँ कोई भी अच्छे पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो क्लियरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है. अगेन ग्रे टॉक्स अबाउट 10 ईयर सॉरी लास्ट 3 ईयर डेटा. सो यहाँ पे 10 साल का डेटा है जिसको हमने 3 सेक्शन में पार्ट आउट किया है. सो फर्स्ट सेक्शन इज 2012 to 15. If you see, the gray part is GDP growth of 11%, but corporate profit, which is more than 1,000 crore market cap company, उनका corporate profit मिला है. तो blue line is talking about 2.4% growth. वही जब next phase of life India आगे बढ़ी, and coincidentally it's matching up with the current government tenure, our GDP growth came down from 11 to 10, but our corporate profit went up to 7%. एंड प्लीज रिमेंबर यही टाइम पे हमारे यहाँ पे डिमॉन भी हुआ था. एज वी मूव फॉरवर्ड, 2019 से 22 के बीच में टू मेजर इवेंट्स हैपेंड. वन वाज जीएसटी गॉट इम्प्लीमेंटेड, सेकंड वन वाज कोविड. डिस्पाइट दैट, ऑब्वियसली आवर जीडीपी केम डाउन टिल टू 9% फ्रॉम 10 to 9, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो ब्लू लाइन है, इट मूव टू ऑलमोस्ट 26%. इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क, बैंक्रप्सी लॉज व्हिच गॉट रेक्टिफाइड, उसके कारण सारे एनपीएस बहुत फास्ट वे में रिजोल्यूशन की ओर चले गए. व्हाट हैपेंड? जो प्रमोटर अपने पुराने प्लान को छोड़ नहीं रहे थे, बैंक्स के पास जो आ सकते थे रिजोल्यूशन के लिए, उसके कारण बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे हर्ट हो रहा था. नाउ व्हेन दोस असेट गॉट ऑक्शन्ड, बैंक गॉट देयर मनी बैक एंड बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी वेंट अप. यही जब ऑक्शन होके एसेट जिनके हाथ में गए, जैसे एसआर का प्लांट या भूषण स्टील का प्लांट जिनके हाथ में गया, वो प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो गई. सो ओवरऑल सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई जस्ट बाय रेक्टिफाई सर्टेन पॉलिसी फ्रेमवर्क. सो फार इंडिया इज स्टिल इन द रेक्टिफिकेशन मोड. 2021-22 से हम ग्रोथ मोड में चले गए. ग्रोथ मोड माने क्या? जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इनिशिएट कर रहे हैं ग्रोथ की ओर. माने पीएलआई स्कीम्स हो सकता है या गति शक्ति प्रोग्राम हो सकते हैं. सो दोज काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स कि इंडिया को ग्रो करना है तो हमारे पास क्या प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की, सो दैट इंडिया कैन ग्रो फास्ट. सो फार इंडिया वाज ओनली ऑन द रेक्टिफिकेशन मोड. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ ग्रोथ फेज. जब भी you will hear lot of वर्ड लाइक अमृत काल. अमृत काल में क्या होता है? जो आपने पुराना पेन देखा या आपने पुराना परिश्रम किया, उसका फल, उसका बेनिफिट आपको आगे मिलता है. जब बेनिफिट आना है उसको हम अमृत काल कहते हैं. तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज गेटिंग इनटू. जो हमने पेन पॉइंट्स देखे हैं, पॉलिसी रेक्टिफिकेशन जैसे डिमॉन हुआ, जीएसटी हुआ, बैंक्रप्सी लॉज हुआ, उसका अभी बेनिफिट हमें मिल रहा है, प्लस अभी एक्सिलरेट करेंगे ग्रोथ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. लॉट ऑफ पीपल सेज दैट इंडिया का मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है. अभी अगर वही पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर को हम पूछेंगे, सर आपकी पोर्टफोलियो में ये 50p के स्टॉक्स भी है, 40p के स्टॉक्स भी है, तो हमें क्या कहेंगे? उसकी ग्रोथ अच्छी है एंड उसके 5 ईयर की जो पी है, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्रोथ कैपेबिलिटी. तो हम भी वही कहते हैं कि इंडिया का जो अच्छा फेज शुरू हुआ लास्ट 10 साल में, वो अच्छे से कैप्चर कर रहा है. सो विल टेक लास्ट 10 ईयर डेटा. लास्ट 10 ईयर डेटा के हिसाब से इंडिया का पी एवरेज इज 21. अगर वही डेटा को मैं कहूँ कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस, प्रॉब्ली इफ आई कैन गो टू 20 ईयर डेटा, देन दिस नंबर ऑफ 21 विल फॉल डाउन टू 18. अगर मैं 18 एवरेज पी की बात करूं तो इंडिया एट 22 विल लुक ओवर वैल्यूड. वही मैं लॉजिकली लेटेस्ट 10 ईयर्स की बात करूं तो माय एवरेज इज 21, उसके सामने इंडिया का पी इज 22. दैट टू एट दिसंबर 2022 के वक्त की बात है. जैन में तो इट हैज कम डाउन डेफिनेटली. So India's valuations are not aggressive. They were on relative scale also we have corrected versus China. And absolute basis में जो last 1-2 साल में slow
कहते हैं टाइम करेक्शन हुआ है, उसने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। यहाँ तक तो ठीक है, बट व्हाट इफ इंडिया वर टू करेक्ट? लास्ट 10 साल में सेम टाइम पीरियड में ग्लोबली देयर हैव बीन 4 मेजर इवेंट्स जब मार्केट हैज करेक्टेड बाय 20%। आई मीन अगर आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 10 साल में 4 मेजर करेक्शन हुए, नोबडी विल रिकलेक्ट इट। एग्जैक्टली वही होता है हम स्टॉक मार्केट के साथ, जब इवेंट होती है तब हमें याद रहता है, बट जब इवेंट विथस्टैंड करके हम आगे बढ़ते हैं तो इवेंट बहुत छोटी लगती है। हालांकि चलो, दैट इज हाउ द इन्वेस्टमेंट साइकिल बिहेव्स, बट लेट अस टॉक अबाउट डेटा। व्हेन दोज इवेंट हैपेंड, हाउ डिड इंडिया डू? Out of these 4 times when market corrected by more than 20%, India corrected between 15 to 19%. COVID was the only time जब इंडिया की करेक्शन स्लाइटली हाई थी, अराउंड 31-32%, और मार्केट की करेक्शन, वर्ल्ड मार्केट कैप की करेक्शन थी 29%. So India out of 4 times, 3 times has corrected lesser. What it means? We are showing resilience. We are showing कि okay, there is excess liquidity in the market. मार्केट साइकिल्स अपने ओर से ऊपर नीचे होते हैं, बट एज अ इकोनॉमी वी आर स्ट्रॉन्ग. सो वंस डस्ट सेटल्स डाउन, विल बी बैक इन ग्रोथ मोड इवन ऑन मार्केट कैप. नाउ इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करें? अगर इंडिया की ग्रोथ, जैसे मैंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बराबर है, बट इंडिया का जीडीपी इज 1/6 ऑफ चाइना. व्हाट इट इफेक्टिवली मीन्स, कैन वी बिकम चाइना? नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, एंड वो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा. इफ आर जीडीपी जो हमने देखा अभी तक वाज ग्रोइंग एट 10% इन INR टर्म्स, लेट अस से आर जीडीपी ग्रोज ओनली एट 9%. 9% at end of 7th year can double the number. That means 100 rupee with 9% compounding interest rate will become 200. 7 years more, 200 will become 400. India's GDP today is 3.3. It will double up in 7 years, which is 6.5 roughly, and thereafter it can also double up, which is 13 trillion. China economy is today 18 trillion. So we are not talking about surpassing China. हम तो कह रहे हैं कि जितना भी इंडिया ग्रो कर ले, इट इज ओनली गोइंग टू एड अप मोर एंड मोर इंडिया एवरी 7 ईयर. एक इंडिया के बदले हम 4 इंडिया की बात करेंगे इन 2035. दैट्स द पावर ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया इज गोइंग टू विटनेस. नाउ कमिंग टू दिस कैटेगरी, कि व्हाई, इफ इंडिया इतनी ग्रोथ मोड में है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को आप तो पूछेंगे ही कि सर एक कोई ऐसा प्रोडक्ट दो ना जो सब कुछ कैप्चर करे. आप मुझे बोलते हो स्मॉल कैप में जाऊं या मिड कैप में जाऊं कि आप लार्ज कैप में जाऊं, एंड जब भी मैं वहां पे जाता हूँ माय एक्सपीरियंस इज पुअर, बिकॉज मैं जब लार्ज कैप लेने जाता हूँ तो मिड कैप चलते हैं, मिड कैप लेने जाता हूँ तो स्मॉल कैप चलते हैं. थीम वाइज भी आई डोंट नो विच परफेक्ट थीम. हेल्थ केयर थीम में लेने गया तो आईटी चला, आईटी लेने गया तो इंफ्रा चले. ग्रोथ एंड वैल्यू, वैल्यू मैंने 5 साल इन्वेस्ट किया, सॉरी ग्रोथ मैंने 5 साल इन्वेस्ट किया, और लास्ट 3 साल में तो वैल्यू चला है. So there is confusion always in the mind of investor, and investor will always be impatient. तो इन्वेस्टर की impatient दो चीज को है. वन इज प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि हमने अगर उसके साथ जो उसको प्रोडक्ट चाहिए उसको बेनिफिट करने के लिए अगर उससे मैप अप नहीं किया, तो ऑलवेज कम बैक नॉकिंग एट योर डोर कि साहब आपने मुझे क्या दे दिया. सेकेंड इज टेन्योर. बहुत सारे इन्वेस्टर अभी टेन्योर की भाषा समझने लगे हैं कि सर आप 1 साल के लिए नहीं, 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए एंड आपको बेनिफिट मिलेगा. सो टेन्योर इज समथिंग दैट यू विल हैव टू पुश, एंड आपने वो पहले से बहुत बढ़िया काम किया है, hence market has also grown. But product wise, I think product selection becomes important if somebody is wanting to participate in India with a long duration and single solution. Just in case, if I'm suggesting an investor one single product, and उसका illustration हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे 3 अलग अलग कलर है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. ग्रीन विल टॉक अबाउट वो पर्टिकुलर साल में उसने बेस्ट परफॉर्म किया. ब्लू विल टॉक अबाउट उसने मीडियम परफॉर्मेंस किया, दैट इज नंबर 2. एंड रेड विल टॉक अबाउट उसने लोअर परफॉर्म किया. इट्स अ रिलेटिव कंपैरिजन. तो आपने नोटिस किया होगा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में बहुत सारे रेड्स हैं. स्टूडेंट की भाषा में देखें तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं या प्रॉब्ली दे आर नॉट एबल टू कम आउट वेल. वेल जो बीच वाला जो स्टूडेंट है, ही लुक्स टू बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, यू नो, ब्लूज एंड ग्रीन्स, नो रेड्स. बट जब मैं बीच वाले कॉलम का एंड में आउटकम देखता हूँ विच इज कैगर रिटर्न्स, दैट इज 20%, और उसके नेबर विच इज ऑन दी थर्ड कॉलम स्मॉल कैप का देखता हूँ फॉर ऑल दी रेड,
it has got, it is still 19%. So इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर को आउटकम तो बरोबर मिलता है if he stays invested, but the problem is with the journey. Now imagine if an investor would have come to you 2015 में, कि can I invest in small cap? You would have suggested yes, surely sir you should invest in small cap. But 2016 के बाद, सॉरी 2015 में अगर उसने इन्वेस्ट किया होता, 2016 में he would have witnessed lower returns in small cap, and he would have observed mid cap, which is 6.5 return for 2016, has done better. Then he would have decided, okay मैं mid cap या large cap में चले जाता हूँ, and completely उल्टा हो जाता है. 2017 में mid cap is not outperforming, but it is the small cap which is outperforming. So a swing factor will keep continuing within the market because market has market cycles. Market cycles में क्या आता है, लार्ज एंड मिड कैप की अपनी अपनी साइकिल्स होती है. मार्केट साइकिल्स में और क्या आता है, तो सेक्टर की खुद की साइकिल्स होती है, ग्रोथ वैल्यू मोमेंटम खुद की साइकिल्स होती है. सो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग साइकिल्स चलती रहती है. हेंस देयर इज टू मच कंफ्यूजन व्हिच कैन ऑलवेज प्रिवेल इन मार्केट. एट टाइम्स विल बी द स्वीट स्पॉट कि आपने सब कुछ आइडेंटिफाई किया, एंड एट टाइम्स विल बी इन अ स्पॉट कि आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम कहते हैं कि मल्टी कैप इंपॉर्टेंट है टू गिव यू अ वन प्रोडक्ट सोल्यूशन, देन विल से ओके, let us talk about the benchmark and how this product is drafted. So benchmark is BSE 500 or Nifty 500 with a segmentation of 50% weights to large cap, 25% weight to mid cap, and 25% to small cap. Right now हम एक plain vanilla BSE 500 को कंपेयर कर रहे हैं with multi cap जो सेबी ने ड्राफ्ट किया है. Now BSE 500 में आर अंडरस्टैंडिंग इज, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड मैनेजर कहते हैं कि BSE 500 इज आर बेंचमार्क, बट आप अगर देखोगे तो BSE 500 में 78% इज लार्ज कैप फ्रॉम वैल्यू वाइज. तो ये तो पूरा ट्रू रिफ्लेक्शन है नहीं. नाउ टू गेट ट्रू रिफ्लेक्शन, सेबी हैज सेड कि लेट अस क्रिएट अ प्रोडक्ट which gives a true reflection of all three market caps, and let us give liberty to the fund manager of last 25%. So first 25% is large, second is mid cap, third 25% is small cap. Moving to next slide. यही अगर दोनों इंडेक्स एंड सेबी डिफाइंड मल्टी कैप इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करें ओवर लास्ट 15 years, सेबी डिफाइंड मल्टी कैप which is 50% large cap, 25% small and 25% mid cap has still given 1% outperformance over BSE 500. Now BSE 500 is what all small cap managers are trying to beat BSE 500. वो बेंचमार्क के ऊपर ये पर्टिकुलर मल्टी कैप एज अ इंडेक्स उसने आउट परफॉर्म किया है. नाउ इमेजिन सेबीज एक्चुअल definition is कि you should have 25% large cap, 25% mid cap and 25% small cap, and if fund manager decides to have more of mid cap and small cap, then probability of his returns can also improve, right? So this definition is slightly flawed which SEBI has provided, but what is also more important is SEBI has come late with this product. I think as a SEBI, as a regulator, due respect to them that they've identified this product and it's right that we should have this product. But FlexiCap के पहले ये product आता, so I think investor should have got a better experience. FlexiCap में क्या है, which is also a kind of diversified fund which swings between large, mid and small, but it swings. It doesn't have a bare minimum 25% weight to every category. While multi-cap, it has bare minimum 25% to each category. So इससे क्या होता है, आपकी standard deviation कम हो जाती है. Now standard deviation is nothing but volatility. As a fund manager, I like volatility, but as an investor, they don't like volatility. As a fund manager, if I'm getting a stock, I've invested in a stock at a 2000 rupee, and suddenly if there is a 10% correction, I'll add more. That is how I like the volatility. But for same investor, he'll come back to you and say, sir, मेरा NAV 10% से नीचे आ गया, but he will not participate more. So idea is to smoothen out his experience and reduce his standard deviation volatility so that he stays invested for longer period of time. So that is the thesis and basis on which regulator decided to come up with multi-cap as a theme. Moving forward, just one chart we'll see.
whether it's a right time to invest or a wrong time to invest. I would say, as a lump sum investor, the timing is equally important, but the tenure is more than timing important. तो हमने क्या किया है, सेम निफ्टी 500 इंडेक्स को विच इज 50 25 25 को लास्ट 10 साल का डेटा लिया, एंड वी सेट जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, लेट अस से फर्स्ट ईयर उसने इन्वेस्ट किया पीक ऑफ द मार्केट पे, एंड नेक्स्ट ईयर उसने रिडीम किया 367th डे पे, but he does this every time for next 10 years. Every time only he would invest at the peak of market. At how his bad timing could be. What happens? His average return, which is blue line, is 6%, but there are years where his poor performance or negative performance is even 18%, while good performance could be 44%. Now, problem is when investor sees 44%, he comes back to you with an expectation that 44 is every year's outcome. जो generally ये pandemic में investments हुए हैं, they gave this kind of outcome. But as pandemic started to normalize, economy started to normalize, market cap also started to normalize, and our returns also started to normalize. So what we have to say to the investors, that please stay invested for more than 1 year, because the following data, which is 3-year rolling return, says that if you stay invested from 3-year perspective, तो खराब में खराब bare minimum return that a product could have given was 6%. Had you stayed invested on an average 3-year basis पे for 10 year, 3 year की आपने एक SIP ली, वापस उसको रिडीम किया, वापस आपने पीक में भले लिया बट वापस 3 year के लिए इन्वेस्टेड रहे, तो भी आपका 11% एवरेज रिटर्न जनरेट हुआ। वही 5 year के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% एवरेज रिटर्न जनरेट हुआ। So the more you stay invested, you don't have to care about timing. Now, why Bank of India multi-cap fund? So Bank of India multi-cap fund, definitely it will talk about allocations, because 75 to 100% will be invested in equity. Equity के अंदर large cap, mid cap, small cap, bare minimum 25% हम तीनों कैटेगरी में invested होंगे. On the upper side, we can oscillate between 25 to 15 each of the category. बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जस्ट गोइंग ऑन द सेम स्लाइड, या कि यहाँ पे एलोकेशन के साथ एक रिस्क लिमिट होना भी जरूरी है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम टू द फंड मैनेजर। अभी फ्रीडम तो मिली है, बट फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। सो एज अ फंड हाउस, वी हैव डिसाइडेड दैट व्हेन विल अप्रोच अ सब्जेक्ट, लेट्स से सेक्टर की अंडरलाइंग इंडेक्स की वेट 5% है, बट इफ फंड मैनेजर लाइक्स दैट इंडेक्स, इट डजंट मीन कि उसके ऊपर वो 25% का वेट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है, अगर आपको 5% इंडेक्स सेक्टर की वेट है इंडेक्स में, मैक्सिमम यू कैन अलोकेट मोर इज 10%, माने 5 + 10 = 15% तक आप वो सेक्टर पे ओवरवेट पोजीशन ले सकते हैं। या अगर सेक्टर की वेट ही वहां पे 15 है और आपको पसंद नहीं है, देन ऑल्सो बेयर मिनिमम आपने 5% वहां पे वेट मेंटेन करना है, विच ऑल्सो मीन्स 15 - 10 = 5. By doing this, you are saying I'm regulating your individual biases towards the indexes and the situation where we are, and same we will do for the stocks. So this is one of the highest, you would say, risk mitigating parameter जो हमने इसमें induce किया. Now second parameter, which is very unique to this product and is not comparable to any of the product which are available, is how do you invest the remaining 25% in the market. So what are we saying? We'll invest through North Star as a guiding part strategy. Now North Star is what? हिंदी में बोले तो ध्रुव तारा. ध्रुव तारा is not a static star. Sorry, ध्रुव तारा is a static star, but it will not tell you कि exactly आपको कहाँ खड़े रहना है. But it will tell you exactly आपको कौन से डायरेक्शन में चलते हुए जाना है. So it's a guiding path and not exactly a spot where you have to stand. So there are more than 5 strategy जो हम यहाँ पे deploy करते हैं. But in the following slide, I'll just touch upon the one strategy that we deploy. It's a simple strategy. In fact, third, fourth भी जो हम बात करेंगे, if time permitting, it's a simple way that we identify, certain mismatches, disjoints in the market. And उसको जब हम rectification mode में portfolio में लेके आते हैं, तो we get a better outcome. We have done this in text plan, we have done this in flexi cap, and we have seen good results out of it.
Large and mid में recently we introduced this kind of framework and we saw the benefits as well. Now coming back to this, how does this framework work? So आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो there are two चार्ट्स, एक अपर साइड पे चार्ट है और लोअर साइड पे चार्ट है. जो अपर साइड पे चार्ट है इट टॉक्स अबाउट टू इंडेक्सेस इन इट. जो ब्लैक है दैट इज मिड कैप एंड जो ऑरेंज है दैट इज लार्ज लार्ज कैप. और दोनों के बीच का जो गैप है वो ग्रीन कलर में डिनोट हो रहा है. नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम logically mid cap companies are those companies which grow fast. So mid cap index will also technically go in that pace, and large cap companies are the companies which should grow at a stable pace. तो उसकी इंडेक्स मूवमेंट भी वैसे होगी. सो डायरेक्शनली द इंडेक्स गैप विल कीप इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट कभी कभी इनकी पेस एक्सेलरेट हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी रिवर्स हो जाती है. तो दैट इज व्हाट इज गेटिंग कैप्चर्ड इन दी लोअर चार्ट. 2017 और 18 के बीच में एक पीक फेज आया था एंड 2020 में एक बॉटम फेज आया था. नाउ 2017 और 18 में क्या हुआ, गवर्नमेंट अनाउंस्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, and because of which mid cap and small cap corrected. Resultantly, जो पीक हुआ था, आइडियली फंड मैनेजर को सिग्नल मिलना चाहिए था कि मिड कैप हैव रैलिड अहेड ऑफ लार्ज कैप and it's good time to moderate your position. This index will give you signals, and these signals are applicable for more than 1 year. It is not a momentum signal, it's a directional signal. Same in 2020 पे जब फास्ट फॉरवर्ड करके हम आते हैं, दिस इंडेक्स जो नीचे की साइड पे वापस जो रिलेटिव इंडेक्स बना है, it bottomed out. It started to give you a signal that it is no more showing that mid cap is bad. It is showing that there is chance that you can invest more in mid cap and you can make better returns. आपको उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ तक का टाइम मिला टू रेक्टिफाई द पोजीशन. सितंबर 2020 में जब 14 डेज के लिए कंसेक्यूटिव करेक्शन हुआ मार्केट में, वेरी रेयरली इट हैपेंस इन अ मंथ लाइक दैट, market started to shift from large cap to mid cap. Market took the confidence that we have survived during the time of COVID, and now is the time to start participating in mid cap ideas. जो भी survive किए हैं, they will be the survival and the maximum beneficiary when things start to turn normal. So that is where you see the path which has been highlighted, super normal mid cap rally आई. And that is how this identification on time, or slightly ahead of time, will also help you to initiate better returns over a period of time. Same we also do for sectors, but sector हम index weight लेते हैं and उसके average के साथ उसको compare करके देखते हैं कि average, let's say financials की जो average होती है, I have not captured that in the PPT, but I'll just touch upon it. uh, let's say Nifty के अंदर we all know financials का weight है somewhere around 38-39%, but let us take for example, if the data was showing it was average of 35, and right now जो weight है वो 39% पे है. So the index is giving you communication that I have gone above average, and if that weight today is 31, then index is, or that chart is saying that I've gone below the average. जब भी extreme movements होती है, it also gives you opportunity. Either on the upper side, when it overshoots, it gives you an indication that it can saturate fast. When it undershoots, average के नीचे चले जाते हैं, more than 2-3 year तक अगर वहां पे रहते हैं, तो we have seen lot of turnaround sectors emerging when that event happens. So हम क्या करते हैं, ये दोनों data points को blend करते हैं. If I have been able to identify, let's say for example, IT sector is going to do good, and my mid cap chart is showing me certain positivity, then I will try to see, can I identify more mid cap ideas in IT? But same, if my sector confidence is not there and still want to participate, then I'll go with large cap to minimize my downside risk. So this is how blended approach we use, and that's the third style, which is part of those more than 5 parameters we use to run for identification. So how is this product different? The North Star strategy that we use, that allows us to do something different. Otherwise जो मार्केट में प्रोडक्ट है मल्टी कैप, सबकी परिभाषा तो सेम है, बिकॉज सेबी ने सबको सेम ही मैंडेट दिया है. What more you can bring on table will help you to differentiate as well as generate superior returns for investor, hopefully from 3 year 5 year perspective. So this was what multi-cap as a strategy is, and hope
we we are able to do a more justice to our investor with this multi cap product going forward. As a house हमने diversified strategy में बहुत अच्छा काम किया है. We have generated slightly better returns versus the peer sets as well. डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं टैक्स प्लान हो गया, लार्ज एंड मिड हो गया, टैक्सी कैप हो गया, and that confidence is something that we are carrying to the multi cap as a fund or as a strategy as well. So yeah, this was it, and this product is more suitable for investor who want to have a long duration, give me smooth outcomes, don't give me sleepless nights. It's very suitable Oh, for them. fantastic. So thank you for a lovely session. It was very insightful. Let's open this floor for Q&A. Manju or Arjun, you can ask the partners to ask questions. My only request to all the participants, you can unmute your line and आप सवाल कर सकते हैं नितिन जी से and we'll be happy to answer your questions. हाँ, नितिन जी का आपने प्रेजेंटेशन देखा सभी ने, तो काफी कुछ उन्होंने कवर किया। तो आपको कुछ भी अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज यू कैन आस्क। So meanwhile, we get any questions from participants or partners. There's one question. ये फंड में आप क्या देख रहे हो? Are you guys targeting SIP मोड में पैसा चाह रहे हो या लमसम में भी आप वाला comfortable? Because previously जो हमने NFOs देखे हैं, so they were typically focused on they want SIP money in a staggered fashion. लमसम नहीं चाहिए. Because what has happened is जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2009 में जैसे एक रैली आई थी and then 2010 to 2013 there was a consolidation mode and similar what we have seen in 2020 to 21 में one side bull run था. उसके बाद are you expecting a consolidation phase? These were my two questions. मतलब first inflow आप कैसे ले रहे हो? मतलब are you all comfortable with lump sum as well or only SIP mode में देख रहे हो? No, And yeah, yeah, please and continue. yeah, and second question was, are you expecting a consolidation mode for a short period? Yeah, I totally agree with you. 2023, not even short term. 2023 as a year is going to be volatile year. वहाँ पे आपको सेक्टर अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेगी. Like for example, uh, for today, if I were to see sector opportunity, where does it exist? Then I will first go and see मेरी downside कहाँ पे protected है. And for that matter, I would say power utilities or healthcare to an extent. They are helping me with those kind of limited or protection on the downside. But वही अगर मुझे front foot पे जाके देखना है कि what can give me a positive delta, then I'll say industrial, banking sector, these are looking very healthy and these have potential to give a very healthy outcome. So it has to be blend of style and blend of portfolio creation work, so that we can navigate out different market cycles. Now typically क्या हो जाता है, if I get gravitated with the mindset कि I have to wait for this correction, then I will always stay in that mindset and will miss out on lot of opportunities. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स को भी हम मॉनिटर करते हैं कि उसकी मूवमेंट कैसे रही ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10-12 years. वहां पे हमको काफी अर्ली सिग्नल्स मिलते हैं कि सेक्टर ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में चले गया है या हीटेड ट्रेजेक्टरी में चले गया है. एंड इफ इट्स बिलो एवरेज, इट्स अ सिंपल टूल, बट दैट टूल हैज टू बी यूज्ड इन अ क्वेश्चन मार्क फ्रेमवर्क. जब वो 2 साल तक नीचे है, देन वी फोर्सफुली स्टार्ट आस्किंग आवरसेल्फ, यार यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं बिकॉज इट्स नो मोर फॉलिंग. एंड जब हम वो सेक्टर की प्रॉफिट देखते हैं, इफ इट्स स्टेबल, then something positive and this profit growth could again come back. Probably this is where even जो कहते हैं क्लासिकल हेल्थ केयर कंपनीज हैं, लाइक्स ऑफ सिप्ला है या सन है या अबॉट है, तो वहां पे वो क्लासिकल दिख रहा है, वो दैट इवेंट कैन प्ले आउट. आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी स्टॉक आइडियाज, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाउ डज दिस फ्रेमवर्क वर्क. सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम एंड डजंट फोर्स यू टू बॉक्स आउट योरसेल्फ एंड से कि यार मार्केट थोड़ा टफ लग रहा है. हालांकि योर पॉइंट इज राइट दर्शिक. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चैलेंजिंग ईयर बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होंगे. जब भी फेड ड्रिवन इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, एंड दिस टाइम
फेड इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ रिसेशन, फेड ट्रिगर्ड रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फेड को चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली यूएस स्लो डाउन हो जाए ताकि उसका इन्फ्लेशन नीचे आए। एंड साथ में इट्स एन आर्ट कि आप कौन से टाइम पे उसकी इंटरेस्ट रेट वापस नीचे लाना शुरू करो ताकि recession doesn't stay for more than 2 months or 2 quarter and growth can come back. So it's going to be a yo-yo kind of situation which US is going through. उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रब ऑफ इंडिया पे आएगा। नाउ दिस डेटा इज नोन टू होल वर्ल्ड, वुड दे वेट फॉर दैट इवेंट टू प्ले आउट एंड देन पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। पास्ट में हमने देखा है कि अगर डेटा इज अवेलेबल देन मोस्टली दैट इवेंट हैज बीन डाइजेस्टेड। एंड हम तो मैं तो सबको यही कहता हूँ, हम तो पंडित हैं, हमें दोनों मंत्र आने चाहिए, शादी के भी मंत्र आने चाहिए और तेरवे की भी मंत्र आने चाहिए। Absolutely, We need to absolutely. invest and we need to learn and invest in both side of markets. Correct. So, my first question was, आप जो NFO में inflows सोच रहे हो, वो SIP मोड में ज्यादा देख रहे हो या lump sum is also something? Right now for the correction that we have witnessed over last 40-45 days, ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है to participate lump sum as well. Had it been December, I would have been reluctant to give you that kind of confidence. I would have still insisted partly आप कीजिए and partly आप SIP भी रखिए. But right now market is giving you a lot of comfort sign. Can we have 15% kind of correction in market? Answer is yes. That kind of correction can happen. But as I mentioned, sector identification कहाँ पे अपना capital protect करना है. Initial जब हमारा roughly 40% portfolio बनेगा, I think capital protection is what will be kept in mind. कि initial level पे जो भी capital जा रहा है, जो already sectors bottom out हो चुके हैं वहाँ पे जाएगा. Correct. Hopefully if market corrects then we benefit, our downside gets protected. And if we able to get वही time पे growth stories or something that we want to participate aggressively in terms of pro cyclical, वो correction mode में हमको मिल जाए तो it will be like lovely event to happen. Great. And one more thing I wanted to ask कि बहुत सारे NFOs में हमने देखा है फंड मैनेजर्स को बोलते हुए कि there is a bare minimum time holding period, अगर उतना रखेंगे तो आपका कैपिटल इरोजन लगभग जीरो तक हो जाता है। हम्म, तो आपने भी ऐसा कुछ टूल बिठाया है जहाँ पे कोई बैक टेस्टिंग करके या कुछ कि इतना मिनिमम पीरियड अगर हम रखे तो कैपिटल इरोजन जो है वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। इज देयर एनी मिनिमम पीरियड? yes, yes. जैसे मैंने वो एक्सरसाइज दिखाई 1 ईयर के लिए, जब भी आप पीक में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको हो सकता है 44% भी पॉजिटिव रिटर्न मिले व्हेन यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, एंड हो सकता है -18 भी। बट वही टेनर को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, टाइमिंग से ज्यादा टेन्योर बढ़ाइए, जैसे डेविड करता है, टाइमिंग एंड टेन्योर दोनों। बट आई एम सेइंग जस्ट टेन्योर पे आप ज्यादा टाइम खड़े रहिए पिच पे। 3 साल के टेन्योर में मिनिमम रिटर्न दैट इन्वेस्टर वुड हैव मेड वाज 6%, वही बैक टेस्टिंग में। दैट्स मिनिमम रिटर्न, एवरेज रिटर्न वाज अराउंड 11%। एंड एनी जैसे फंड एट्रीब्यूशन में व्हाट डू यू थिंक योर हैवी वेट ऑन व्हाट आई मीन फाइनेंशियल बैंकिंग कैसे रहेगा, मतलब फंड एट्रीब्यूट्स की बात करें? Yeah. So right now, the way I was thinking about the portfolio and it can shape up is there will be a lot of protection which will start with, because market जो मोड में है आपको protected assets already मिल रहे हैं at lower side of the valuation, and जो थोड़े high valuation पे चल रहे हैं, lot of industrial names which are on our radar. If they correct by 15-20%, they will be top on our radar and top in our portfolio. Banking में भी शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश है for correction, and if that happens then we'll be back in and eagerly trying to participate, especially on the PSU side. Banks में one scope है to see further participation to happen. So broadly, there are multiple sectors. IT is something which we are not very comfortable, because हम जो भी sectors को देखते हैं, if they have exposure towards exports market या international market, we are trying to delay our investment towards that market or that company. वो जितना हम डालेंगे, we'll try to come to those kind of sectors, those kind of companies at a later part of the year. जब Because तक you feel global economy थोड़ा gloomy है तो you don't want to get into that
space. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी राइट वेरी राइट। तब तक जो इंडिया डोमिनेटेड स्टोरीज हैं, कुछ एक सेक्टर्स ज्यादा उसमें अट्रैक्टिव है, कुछ एक बॉटम आउट हो चुके हैं, तो विल ट्राई टू बी अराउंड दोस सेक्टर्स। Great, great. So there were pretty interesting data points आपके स्लाइड में हमने देखा. I mean, lot of other AMCs they come and more or less 70% सेम ही चीजें होती हैं. But I came across very good data point जैसे आपने ये markets का भी बताया. Lot of people talk that market अभी भी expensive है. But a good example जैसे fund managers 40 PE के भी लेते हैं, 50 PE के भी लेते हैं, saying that there is more potential. So similarly, I mean, if is it wrong to say that your fund house view is that there is no steam left? No, would say I am bullish on India for next 20 years, and मेरे लिए her downside is an opportunity. And honestly, I'm not saying it just by for marketing this product or marketing my position. It's so simple, US sorry China and India का अगर population similar है, and for all the policy framework जो हमने rectify किया है, and for all the effort and rectification process which is still continuing, we are talking about Gati Shakti, we are talking about more metros getting created, more uh, ports getting created, airports getting constructed. We are talking about hydrogen technology to come in. Now, beauty of this hydrogen technology is, as a country, you are right now importing crude, and we talked about EV as an alternate, way to reduce this uh, crude related exposure. But the problem is, India में तो EV बनता ही नहीं है. So for a government who is right now subsidizing, even he understands कि मैंने तो एक जगह पे crude import बंद किया है, but I'm still paying dollar for crude. If I'm stopping, I'm saving that dollar. But वही सेव करके मैं अगर ईवी खरीदने जाता हूँ, I'm paying dollar to China because सब कुछ चाइना से आ रहा है. So Right. it's not helping me as a country. What I should be doing is I should be focusing on something else, which is ethanol, which government is boosting. कि at least transition में इसको use करो. And once hydrogen technology comes into place, use this excessively and aggressively. Right now, hydrogen technology is in a phase जहाँ पे static mode में है. एक प्लांट में अगर आप उसको यूज कर सकते हैं तो इट्स इजियर टू यूज, बिकॉज ये हाईली कंबस्टिबल टेक्नोलॉजी है. Correct. इट्स कंसिडर्ड एज एन एटम बॉम्ब. जैसे Right. सीएनजी आए थे पहले, तो सीएनजी को हम क्या कहते थे? इट्स अ मूविंग बॉम्ब. Correct. सेम is with hydrogen. So if you are able to cover this whole pressure part, maintain it and move it around, so this transition to auto fuel is likely to happen. एंड वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही डिस्पेंसिंग सिस्टम ही चाहिए. पेट्रोल पंप पे जाओ, हाइड्रोजन फ्यूल इन कराओ या सीएनजी फ्यूल इन कराओ, सेम. सो इंडिया जब ये होता है ना, तो इंडिया की री रेटिंग क्यों ज्यादा होगी या इंडिया विल बिकम स्ट्रॉन्गर? बिकॉज आर डॉलर आउटफ्लो विल ओनली रिड्यूस. हमारी प्रॉब्लम क्या है? जितना हम डॉलर आउटफ्लो करते हैं, वी आर स्ट्रगलिंग टू देन मेंटेन आवर करंट Reserves. अकाउंट डेफिसिट. Yeah. करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है, तो गवर्नमेंट हैज टू आस्क फॉर फॉरेन मनी या खुद के यहाँ से रेज करना पड़ता है. जब हम खुद के यहाँ से या फॉरेन से रेज करते हैं, या तो अगेन करेंसी के रिलेटेड हमको थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, या इंटरेस्ट रेट साइकिल को हम इनवेरिएबली बूस्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट पेइंग मोर इंटरेस्ट रेट. सो इट्स Right. अ विशियस सर्कल व्हिच इंडिया इज गोइंग हैज बीन गोइंग थ्रू फॉर मेनी डिकेड्स. इसको ब्रेक करने के लिए विल नीड सपोर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. Great. Great. So I think you very well explained the entire concept of multi-cap, and hence I assume that there are no questions क्योंकि आपने बहुत सरलते से, बहुत simple language से हमें समझाया है. So my last question to you, and then we can conclude this call. Uh, give us 3 pointers जहाँ पे हम हमारे investors को बताएं कि you should have an exposure to Bank of India multi-cap fund. श्योर. सो फर्स्ट पॉइंटर इज, इट इज ट्रू टू द मैंडेट. बहुत सारे मैंडेट्स ऐसे भी हैं पीएसएच के जो कहते हैं हम 40% या 50% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे एंड रिमेनिंग पोर्शन मिड एंड स्मॉल में. आई वुड से द ट्रू कलर ऑफ दिस मल्टी कैप इज 25 25 25 एंड लास्ट 25 हैज टू बी judiciously used, because your objective is to give investor returns and smoother returns. कोई भी एक साइड अगर हम टिल्ट हो जाएंगे तो आउटकम खराब होगा. So that's what Bank of India is trying to do differently. Number two, which I talked about, how to use that purchase, last 25, how to use it. That is a method to it rather than just saying कि fund manager conviction. Fund manager change होते हैं.
let's be honest about it. Even हमारे यहाँ पे when I joined in, I've just joined in for last 4 months. What if I were to move on तीन तीन साल में या 3 महीने में? The processes and the system actually helps you to navigate. And once you have this kind of protocols, which is again systems that we talked about, there are more than 5 parameters on basis of which you'll do. It gives you a lot of comfort. जहाँ पे भी आपने product pitch किया है, जिन्होंने भी invest किया है, it gives them a lot of comfort. कि okay, if a person also moves in or out, it doesn't change. TaxPlan जो हमारा flagship product है, it's been there for 14 years. There have been 5 fund managers who got changed. हम जोकिंगली अंदर बात करते हैं कि जितने मीर वीरानी चेंज नहीं हुए इतने तो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं फंड में, but the outcome are still top notch. So that's the beauty of process. So these Yeah, 2 3 things are good enough for investor to believe, and I think we have done very good in diversified products. So there can be absolutely. I've been personally tracking your funds, and most of your equity and hybrid fund, they are in the top quartile. yeah. And I also feel this fund will also have its space in top quartile once it's launched and out for in the market. So thank you very much, Nitin. I mean, Okay. it was Thank you. pleasure having a call with you. Thank you And very much. if we have any other queries, we'll definitely get in touch with Kalpesh or you. Yeah. Okay. So thank you, Darshik and Asit Mehta team for giving us an opportunity to brief our insight on the India and our multi-cap. So definitely looking forward to have a long-term partnership in terms of Definitely, Asit definitely. Mehta, and definitely any part of queries or any part of services will be always available on those lines. So looking forward for and looking for your support and blessing for getting this Definitely. NFO grand success. Yeah, Sure, sure. We'll definitely be a part of Sure, sure, its sure. absolutely. success. Thanks. Yeah, thank you very Yeah, much. yeah. Thank you. Chalo. Thank you, Kalpesh. Thank you. Thank you, Nitin. Yeah. Okay. Bye. Bye. Okay, bye It bye. was a great presentation. Thank you. Thanks. Yeah. Thank you, Arunji. Yeah, we can conclude the call. Thanks. Yeah.